Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. So, today we are going to start chapter number 3 of class 3rd. So, what is that chapter? Computer hardware. Okay, students. So, in this chapter, we are going to learn about the hardware devices. Okay, students. So, now we know that all the physical parts of a computer that we can touch and see are called computer hardware. Okay, all the physical parts, okay, that we can touch and see are called computer hardware. Okay, for examples, keyboard, monitor, mouse, printer are called hardware devices. Okay, because we can see those devices and also we can touch these devices. Okay, so these devices are computer hardware. So computer hardware includes various devices. What are these devices? So here we can see the picture of keyboard, mouse, scanner, microphone, monitor, printer and speakers are given. Okay, so computer hardware includes various devices. So what are these devices? So computer hardware has, first of all, input devices, then output devices, then storage devices. So what are the input devices? So the devices which are used to give instructions to the computer are input devices. Okay, students. So keyboard, mouse, scanner and microphone. So these are the devices which are input devices. What are output devices? So the devices which are used to give output, which are used to get desired output from the computer, are called output devices. So what are these devices? Monitor, printer and speakers are the output devices. Okay, students. Next are storage devices. So these storage devices are hardware devices. So what are the examples of storage devices? So storage devices are basically used to store the data stored in the computer. Okay, students, data that is saved in the computer, and that saved data are stored in the storage devices. Okay, so first is hard disk, then microprocessor, third is pen drive and fourth is CD drive. Okay, so these are the storage devices. Okay, students, first is hard drive, second is floppy disk, third is pen drive and fourth is CD drive. Okay, so these are the storage devices which are used to store data stored in the computer. Okay, so here we are going to study about the input devices. So all the hardware components that helps us to enter data into the computer are called input devices. So जितने भी devices जो कि हमें हेल्प करते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने में, कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करने में, तो वो सारे ही डिवाइसेस क्या कहलाते हैं? वो सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं. Okay, students. So what are the examples of input devices? So mouse, keyboard, scanner, microphone. So all these devices are used to give input to the computer. That's why they are called the input devices. Okay, students. Next is mouse. So we will study the input devices in detail. So your first input device is mouse. So what is a mouse? A mouse is a pointing device. Okay, students. So mouse is a pointing device. It looks like a real mouse. आपने अपने घरों में रियल माउस देखा होगा, तो सिमिलरली उसी के शेप के जैसा जो हमारा कंप्यूटर डिवाइस माउस है वो दिखता है. ठीक है, और माउस का यूज क्या है? माउस इज यूज्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस. It has 2 or 3 buttons and a scroll wheel. Okay, so this mouse can have 2 buttons or more than or 3 buttons. Okay, and a scroll wheel. So between these 2 buttons there is always a scroll wheel in the mouse which helps you to scroll your page up and down. Okay, students, it is used to select any objects on the monitor. If you want to select any object on the monitor, you can select that object with the help of mouse. So here you have studied about the input device, that is mouse. Your second input device is keyboard. So keyboard is an input device. जो keyboard है वो एक input device है. It is
इट इज अ रेक्टेंगुलर इन शेप, और इसकी शेप क्या है, रेक्टेंगुलर इन शेप. It helps us to enter data into the computer. So with the help of keyboard, we can enter numbers, alphabets or symbols into the computer. Okay students, it is a collection of small buttons called as keys. This keyboard has number of small buttons on it. So those small buttons are called keys. Okay, we press the keys to type data into the computer. If we want to type data into the computer, we press these keys. Okay students, next input device is scanner. So scanner is an input device. Okay, it is used to input a copy of text, images, etc. into the computer. Okay, इफ वी वांट टू, अगर हमें हमारी किताबों में लिखा हुआ टेक्स्ट सेम टू सेम एज इट इज हमें कॉपी करना है कंप्यूटर के अंदर, तो हम यूज करते हैं स्कैनर. ओके, या फिर हमें कोई इमेज कॉपी करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं. और स्कैनर क्या करता है, स्कैनर कन्वर्ट्स देम इनटू द डिजिटल इमेज इनटू अ कंप्यूटर. ओके, जो हमारे सामने हमारी बुक में इमेज नजर आ रही है, दैट इमेज when it converts so that image will be converted into digital image by the scanner. Okay students, next is the next input device is microphone. So a microphone is also an input device. Okay, we can record our own voice into the computer. So with the help of microphone we can record our own voice. हम अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं with the help of microphone in an input device, so in the computer. Okay students, so these are the input devices which are used to input data into the computer. A webcam is a input device. Okay, it works like a camera and enables the user to talk to anyone face to face. The webcam which is already installed fit in a computer is an input device. तो ये इनपुट डिवाइस क्या करता है, ये कैसे काम करता है, ये जो वेब कैमरा है ये नॉर्मल कैमरा की तरह होता है जो कि हमें रिकॉर्ड कर पाता है और जिसके जरिए हम फेस टू फेस अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस. सो all the hardware components that helps us to see the final result. जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से हम फाइनल रिजल्ट देख पाते हैं कंप्यूटर पर, फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है कंप्यूटर के ऊपर, तो वो होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, स्पीकर्स, प्रिंटर. सो मॉनिटर, स्पीकर्स, प्रिंटर आर आउटपुट डिवाइसेस. ओके स्टूडेंट्स, so what is a monitor? A monitor is an output device that looks like television. आप सभी के घर में टेलीविजन तो होगा ही बच्चों, है ना. तो आपके घर में जो टेलीविजन है सेम टू सेम जो स्क्रीन, जो विजुअल डिस्प्ले टेलीविजन दिखाता है, ऐसा ही विजुअल डिस्प्ले हमारा मॉनिटर जो कि एक इनपुट डिवाइस है वो डिस्प्ले करता है. ओके स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट फॉर द यूजर. ओके, whatever we are entering as an input into the data is displayed on the monitor. It displays text, images and videos. Okay, और वो क्या क्या डिस्प्ले करता है, वो टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, इमेजेस डिस्प्ले करता है और वीडियोस भी डिस्प्ले करता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज speakers. So speakers are the output devices used to give sound as input. Okay, so with the help of speaker we can get sound as an output. Okay, we can listen to songs, we can listen speeches, or if we are playing movie on the computer and if we want to listen that movie on the speaker, so we can take the help of speakers. Okay, so because speaker is an output device which give us sound as an output. Okay students, so speaker is very useful to us. Okay, your next input device is printers. So a printer is your next output device is printer. A printer is an output device. जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, that prints the information from a computer on a paper, जो कि इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता है कंप्यूटर से पेपर के ऊपर.
जब हम कंप्यूटर पर कोई भी डेटा का प्रिंट कमांड देते हैं तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी गेट द हार्ड कॉपी ऑफ दैट सॉफ्ट कॉपी on a paper. So it is done with the help of printer. Okay students, this output can be used in future और इस output को हम future में use कर सकते हैं as it is stored permanently. Okay students, क्योंकि वो जो data है वो computer में permanently save हो जाता है. Okay students. Next, the output that we see on the monitor is known as soft copy. जो भी आउटपुट हम मॉनिटर पे देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है. एंड द आउटपुट दैट वी टेक आउट फ्रॉम द प्रिंटर, और जो भी आउटपुट हम प्रिंटर से निकालते हैं वो हार्ड कॉपी कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस. सो ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर डेटा, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लाइक फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम डिस्क, hard disk and pen drive. So these all are storage devices which are used to store data into the computer. Okay students, your very first storage device is floppy disk. A floppy disk is a square shaped storage device. As you can see in the picture also, that floppy disk has a square shape and it is a square shaped storage device. It is nowadays known as diskette. It was very popular earlier but it is rare used at present. पहले बहुत ज़्यादा floppy disk को use किया जाता था. In the with advancement and technology, we don't use floppy disk. Instead of, we use hard drive because floppy disk has less storage capacity, okay, as compared to hard drive. Okay students, next is CD-ROM disk. So CD-ROM disk stands for compact disk read only memory disk. So what is the full form of CD disk? So compact disk read only memory disk. Okay student, it can store more data than a floppy disk. So this CD-ROM disk can store more data than a floppy disk. It is a circular shaped storage device और इसका shape क्या है? Circular है. Okay बेटा. Next is hard disk. So what is a hard disk? Hard disk is a main storage device. हमारे कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस क्या है? हार्ड डिस्क है. ओके, इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन. ये जितनी भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर की जाती है एज एन इनपुट या स्टोर होती है वो कहाँ स्टोर होती है? वो हार्ड ड्राइव में स्टोर होती है. इट इज सिचुएटेड इन द सीपीयू बॉक्स. सीपीयू बॉक्स के अंदर हार्ड ड्राइव स्टोर होती है, सिचुएटेड होती है. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विच कैन बी रिट्रीव्ड. ओके, बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द हार्ड ड्राइव. ओके, एंड ऑल्सो इट कैन बी रिट्रीव्ड. हम उसको उस डेटा को बाहर भी निकाल सकते हैं, अपने साथ पेन ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, जब भी हमें ज़रूरत हो. ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस इज पेन ड्राइव. सो एट प्रेजेंट, आज के समय में अ पेन ड्राइव इज़ द मोस्ट वाइडली यूज स्टोरेज डिवाइस. ओके, सो पेन ड्राइव एक बहुत ही बड़े स्तर पर यूज़ करे जाने वाला एक स्टोरेज डिवाइस है. इट इज़ स्मॉल एंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. ये बहुत ही छोटा है और पोर्टेबल है, यानी कि हम कहीं भी कभी भी अपने साथ इसे ले जा सकते हैं. इट कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा अप टू 256 GB. ओके, सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा कितनी जीबी का हम स्टोर कर सकते हैं पेन ड्राइव में? कितना गीगाबाइट्स का स्टोर कर सकते हैं? 256 gigabytes. Okay students, you have to remember this factual information, that is we can store the data of maximum 256 GB in the pen drive. Okay students, so we are done with the reading and understanding part of this chapter. Hope you loved this chapter students. Now we will go through a backup menu of this chapter. That is the most important points of this chapter. So first point is, all the physical parts of a computer that we can touch and see are called computer hardware. जितने भी physical parts होते हैं कंप्यूटर में जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? computer hardware. All the hardware components that helps us to
all the hardware components that help us to enter data into the computer are called input devices. जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कंप्यूटर में इनपुट देते हैं कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए, वो कौन से डिवाइसेस कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. अ कीबोर्ड इज अ रेक्टेंगुलर शेप. ओके, keyboard is a rectangular box. All the hardware components that help us to see the final result, जितने भी hardware result components होते हैं जिनकी मदद से हम final result देख सकते हैं, उन्हें हम output device कहते हैं. All the hardware components that are used to store data are known as storage device. जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में डेटा स्टोर कर सकते हैं, उन्हें हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं. अ पेन ड्राइव इज द मोस्ट वाइडली यूज स्टोरेज डिवाइस. तो ऐसा कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो बहुत बड़े स्तर पे वाइडली यूज हो रहा है? दैट इज पेन ड्राइव. ओके स्टूडेंट्स, hope you understand this chapter very well. So students, we will meet in the next video with our next new interesting chapter. Till then, keep revising and keep learning. Thank you students.